So every time you have a polyprotic acid, in this case, a tribasic acid like phosphoric acid, with the values of K1, K2, K3 given, one thing is always for sure that the value of Ka1 is much more than the value of Ka2, which is much more than the value of Ka3. That's pretty logical because once you have some amount of H plus coming from the first equilibrium, this H plus, because of common n effect, will be pushing this equilibrium back, and the subsequent Ka values are going to be lesser. I hope you all are able to hear me loud and clear. Please respond with a yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Always Yes, Ka1 will be sir. much more than Ka2, which will be much more than Ka3. When you're adding NaOH, to phosphoric acid, you understand 50 ml of 0.1 molar, 50 ml of 0.1 molar, volume in ml into molarity. You have phosphoric acid to begin with as 50 into 0.1, which is 5 millimole. You have 5 millimole. Now, K1 much more than K2, much more than K3 would mean I would talk about these three equilibrium one by one. Naturally, to begin with, I'll talk about the first equilibrium where phosphoric acid would be producing H plus, and H plus, the maximum source of H plus would be Ka1 only. We have to find the pH on adding different volumes of NaOH, which is zero point 0.1 molar. Please hear me out at any point of time. If you have a doubt, you can ask me the different values. When I say 0 ml, it's at time t is equal to 0 जब तक कोई NaOH नहीं डाले हो. जब कोई NaOH नहीं डाले हो, are you all happy with H plus is equal to root over of Ke into C? And I'll treat K1 because K1 is the most significant value. And if this is some root over of 10 to the power minus 3, the concentration is 0.1. This would be H plus is equal to 10 to the power minus 2, and the value of pH would be 2. Are you all happy with this? Yes, sir. When you add NaOH, which is 25 ml, when you add NaOH, which is 25 ml, now 25 ml of 0.1 molar NaOH, 25 ml of 0.1 molar NaOH, and what will be the corresponding reaction? I'll be writing the reaction one by one here, and naturally, with limited space available, I'll have to remove it. 25 ml would mean H3PO4 plus OH minus becoming H2PO4 minus and water, and basically the first Ka or the first equilibrium will be set rolling. Now, how much of OH minus do you add? It's 2.5 millimole to 5 millimole of this, and which will mean that this being the limiting reagent will get over. You'll have 2.5 millimole of phosphoric acid left and 2.5 millimole of H2PO4 minus formed. So when you add NaOH 25 ml, which is 2.5 millimole of OH minus, basically what you have is a mixture of 2.5 millimole of H2PO4 minus formed and 2.5 millimole of H3PO4, which is left. Am I being clear here? So can you repeat once more? See, when you add 25 ml of NaOH, which is 0.1 molar, which is 2.5 millimole of OH minus, you are setting the first equilibrium free. Phosphoric acid with OH minus is forming the salt and water. 2.5 millimole of phosphoric acid will be left, and 2.5 millimole of H2PO4 minus will be formed. So at the end of this titration, you'll have 2.5 millimole of phosphoric acid left and 2.5 millimole of H2PO4 minus formed. Am I clear here? Yes, Yes, sir. sir. What kind of a solution is this? A mixture of these two. What kind of a solution is this? What kind of a solution is this? You can take your time, but you need to answer this because most of you have gone through the basics of ionic equilibrium. Acidic A buffer. mixture, buffer, acidic buffer. Yes, I wanted to hear it from someone. I think it's broken. A weak acid and it's salt with a strong base. Basically, a mixture of these two. It's a buffer where I write pH is equal to pKa. In this case, pKa1 because it's about the first equilibrium plus log of. This is going to be independent of unit because volume value cancel ho jayega. I'm going to talk about the case where they take equal amount of the two. There's going to be a significant
fact that generally in most of the problems you have equal amount of the two. I'll come back to it. But it is equal to pKa1, which is equal to 3. Am I being understood here? Am I being understood here? Yes, sir. Now, when you add 50 ml of NaOH, when you add 50 ml of NaOH, when you add 50 ml of NaOH, I'll need to remove this clutter. I'll need to remove this clutter now. Are we done with B? Are we done with B? I'll need to talk about C now. I'll need to talk about C now. I'll need to talk about C now. Please tell me, can I remove this clutter? Yes, sir. So B was a buffer. B was a buffer. B was a buffer. B was a buffer. For C, with NaOH 15 to 0.15 millimole used, I want to rewrite this. I want to rewrite this as a situation where to phosphoric acid, which is 5 millimole to begin with, you have added 5 millimole of OH minus, and both of them will get over. Both of them will get over. So 5 millimole of H2PO4 minus is left. मैं ना पानी का बात नहीं करता हूँ because सब पानी नहीं हो रहा है. यहाँ मैं पानी का बात नहीं करता हूँ because aqueous medium, everything is in water only. Aqueous medium है. Yes or no? How many of you are aware of this formula? I'm going to derive it. I'm going to derive it very logically. I'm going to derive it using minimum mathematics. But I think some of you know this. You know H2PO4 minus. You know H2PO4 minus as an amphiprotic species. As an amphiprotic species. Please hear me out. Every time acid and base are equal and over. Every time acid and base are equal and over, you have only salt. You think about salt hydrolysis. You think about salt hydrolysis. And the picture of salt hydrolysis, which is some A minus plus water becoming Ha plus OH minus, which is generally the case with a sodium acetate, which is the most popular case of a salt of weak acid and strong base and acetate undergoing hydrolysis, this being a case of anionic hydrolysis, you can easily write it for H2PO4 minus. And I think you are all happy with this. Yes or no? जब सिर्फ सॉल्ट बचता है, Yes, जब sir. सिर्फ सॉल्ट बचता है, तुम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बात करते हैं. ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यू आर टोल्ड कि अगर एसिड है तो एसिड के लिए Ka है, कंसंट्रेशन है, वहां से H+ निकालो. अगर एसिड है और उसका सॉल्ट है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो बफर से उसका इक्वेशन निकालो. और जब सिर्फ सॉल्ट है, तब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं जब सिर्फ सॉल्ट है. So you are more acquainted with acetate plus water forming acetic acid plus OH minus. You call it a case of anionic hydrolysis. This is salt hydrolysis. In situation C, you will want to think about salt hydrolysis. You will want to think about salt hydrolysis. Salt hydrolysis के लिए formula is 7 plus half pKa plus half log C. मैं वो formula नहीं लिखता हूँ, मैं ये formula लिखता हूँ because देखो acetate ना सिर्फ यही कर सकता था. acetate इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है. अगर एक मोनोबेसिक एसिड का अनायन है, अगर एसिडिक एसिड का अनायन है, मोनोबेसिक एसिड का अनायन है, यू कैन ओनली थिंक अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. पर अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है, ट्राइबेसिक है, डाइबेसिक है, तो इसका जो अनायन है वो यहां से OH माइनस दे रहा है और यहां से H+ दे रहा है. H2PO4 माइनस हाइड्रोलिसिस से OH माइनस दे रहा है और Ka2 से H+ दे रहा है. ये और H+ नहीं छोड़ सकता, एसिटेट और H+ छोड़ नहीं सकता. तो अगर सोडियम एसिटेट है या एसिटेट आयन है, यहां पर जब मैं H2PO4 माइनस लिखता हूं, NaOH के साथ में ये सोडियम हाइपोफॉस्फेट ही बनाता है. बट नेचुरली I talk about salt hydrolysis when you have both acid and base over. Here I don't limit it to salt hydrolysis like I do it to acetate or the anion of a normal monobasic acid.
बिकॉज एसीटेट में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, पर यहाँ पर एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ये हाइड्रोलिसिस से OH माइनस देता है जो 7 प्लस प्लस देता है, 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, और ये K2 है, OH माइनस भी दे सकता है, H प्लस भी दे सकता है। यहाँ पर KH भी है और Ka2 भी है, KH भी है और Ka2 भी है, H प्लस भी दे सकता है, OH माइनस भी दे सकता है। एम्फीबियन जैसा, एम्फी मीन्स डुअल बिहेवियर, एम्फीप्रोटिक। क्यों बोलते हैं इसको एम्फीप्रोटिक? इसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक बिकॉज फॉल्ट हाइड्रोलिसिस से OH माइनस दे रहा है और Ka2 से H प्लस दे रहा है। एम्फीप्रोटिक क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? यस सर। एम्फीप्रोटिक क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? मैं इसको डिराइव करूंगा बिना कोई मैथमेटिक्स के, एकदम बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से। आई कम टू दिस, अगर ये सिर्फ क्वेश्चन आता है एज फाइंडिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन, every person who knows how to calculate pKa would simply take it as the mean of 3 and 7, and this might be the simplest question in the exam hall. This would be the simplest question if it's only limited to finding the value. I've also given you the value of the questions in the parenthesis. But I wanted somebody to derive it logically for me. I'll give you enough time to derive it for me. But I want to travel some distance before I can talk about why this is a pH which is constant and independent of concentration. This was dependent on concentration. Even this was dependent on concentration. Even यहाँ पर भी concentration term आता है. यहाँ पर मेरे को concentration से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये constant value होता है. I'll come back to the significance of this particular formula. I'll do that in the next 15 minutes. You'll want to be patient till that time. Let me travel some distance. Let me talk about D, E, and F. And chances are I'll be able to give you a very logical approach to this formula. So far, so good, I believe. Yes, sir. Now D. D. So I had to use this equation to tell you कि एसीटेट में सिर्फ यही हो सकता था, H2PO4 में ये हो सकता है, पर इसके साथ में ये भी हो सकता है। यहाँ पर OH माइनस दे रहा है, यहाँ पर H प्लस दे रहा है, डुअल बिहेवियर है, इसलिए एम्फीप्रोटिक है। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर पॉइंट डी तक तुम 75 ml OH माइनस डाल चुके हो, which is 7.5 मिलीमोल ऑफ OH माइनस, जब ये पूरा 5 मिलीमोल बन जाएगा, जब ये पूरा 5 मिलीमोल बन जाएगा, this equilibrium is taken care of. Now I want to talk about this equilibrium. So when you have added 75 ml, which is 7.5 millimole of OH minus to 5 millimole of phosphoric acid, is as good as, please hear me out, एक बार में समझ लेना, एक बार में समझ लेना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पर ये 5 मिलीमोल था तो 5 मिलीमोल में ये पूरा कन्वर्ट हो गया यहाँ तक। अब जो 2.5 मिलीमोल OH माइनस और डाल रहे हो, जो 2.5 मिलीमोल OH माइनस और डाल रहे हो, adding 7.5 millimole of OH minus to 5 millimole of phosphoric acid is as good as adding ये 5 मिलीमोल में 2.5 मिलीमोल OH माइनस। पहले बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मेरे को, पहले ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को बताओ। This is like setting the second equilibrium rule. पहला 5 मिलीमोल इस इक्विलिब्रियम को यहां तक ले गया, उसके बाद जो 2.5 मिलीमोल डाल रहा हूं, दैट इज लाइक एडिंग 2.5 मिलीमोल ऑफ OH माइनस टू 5 मिलीमोल ऑफ H2PO4 माइनस, बिकॉज यहाँ पे 5 मिलीमोल तो कंज्यूम हो गया इसको कन्वर्ट करने में। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। ये क्या बना, ये क्या बना? ये क्या बना? बेसिक बफ नहीं, एसिडिक बफर ही होगा। ये भी एसिडिक बफर ही होगा, ये भी एसिडिक बफर ही होगा, और ये सेकंड बफर बनेगा व्हिच विल बी अ वीक एसिड लाइक H2PO4 माइनस विद शॉर्ट लाइक HPO4 माइनस माइनस। ये वापस एक बफर बनेगा, और इस बफर के लिए आई यूज अ फार्मूला लाइक pKa2 now, I use the formula like pKa2 now, which will be equal to pKa2, which will be equal to 7. So see, eventually the calculation is as simple as it gets.
And I tell you, at some point of time, I tell you that this is not coincidental. Most of the times, they give you equal amount of the salt and acid in an acidic buffer or salt and base in a basic buffer, because that would mean the buffer is acting at its best. You learn about buffer capacity, and the buffer capacity is maximum. The buffer is best as a buffer when the amount of salt and acid in an acidic buffer or salt and base in a basic buffer is equal. बराबर कंसेंट्रेशन से सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल नहीं होता है, बफर का क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होता है, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है. कम टू दैट. बच्चे लोग हाँ ना बोलते रहो. 100 ml डाल दिया NaOH, 100 ml NaOH डाल दिया, ये 10 मिलीमोल लग गया. 10 मिलीमोल इसका 5 मिलीमोल में डाला हूं, 10 मिलीमोल इसका 5 मिलीमोल में डाला हूं, इज एज गुड एज कि इसका 5 मिलीमोल में 5 मिलीमोल डाला हूं. बच्चे लोग हाँ ना बोलते रहो. आई थिंक वी आर डन विद डी. आई थिंक वी आर डन विद डी. D was the buffer of these two species. Again, an acidic buffer, again a Henderson equation. E would be like the second equivalence point. ये first equivalence point बोलेंगे C को, E को second equivalence point बोलेंगे. मैं इसको graphically और अच्छे से explain करूंगा. For the time being, you will want to respond and agree that now I have got a situation where again this weak acid and this base has got over, and you have 5 millimole of HPO4 minus only to deal with. इसका आदत पड़ना चाहिए. देखो मेरे को एक बार इसका आदत पड़ जाता है ना, तो मैं ये A माइनस के लिए या CH3COO माइनस के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए ना मेरे को इसका आदत पड़ जाता है. अब अगर मान लो मेरे को HPO4 के लिए लिखना पड़ेगा, H2PO4 माइनस के लिए लिखना पड़ेगा, I take it like A minus with water becoming HA. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes or no? When I do it for H2PO4 minus, A minus becoming HA. And now when I have to do it for HPO4 minus, I simply write HPO4 minus, and I'll write H2PO4 minus here. Yes, sir. Salt hydrolysis से OH minus आ रहा है, CH3 से H plus आ रहा है. Salt hydrolysis से OH minus आ रहा है, CH3 से H plus आ रहा है. Amphiprotic, again amphiprotic. And amphiprotic के लिए the formula which is told to you is pH is equal to pKa1 plus pKa2 by 2 in the first stage, and now it will be pKa2 plus pKa3 by 2. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And again, numerically, it's a simple value to calculate. It will be like 11 plus 7, 18 by 2, which is 9. 11 plus 7, 18 by 2, which is 9. 11 plus 7, 18 by 2, which is 9. 11 plus 7, 18 by 2, which is 9. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो. मैं ना यहीं से काफी सारा चीज कंक्लूड कर सकता हूं. मैं यहीं से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं. बट बिफोर आई गो देयर, आई वांट टू प्रेजेंट टू क्वेश्चंस टू यू व्हिच हैव कम इन द जेई सर्कल अगेन. ये दो क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा है. अलग अलग टाइम पे अलग अलग भाषाएं पूछा है. When carbon dioxide is dissolved in water, when carbon dioxide is dissolved in water, species present is or are? And the right answer to this question was carbon dioxide, HCO3 minus, CO3 2 minus, H2CO3. Another question in a different year was in an aqueous solution of H2CO3, species found are, and the options were H2CO3, HCO3 minus, CO3 2 minus, and carbon dioxide. Do you relate to these two questions and the corresponding answers?
ये दोनों जी का क्वेश्चन है। बच्चों लोग हाँ ना बोलो। मतलब कार्बोनिक एसिड में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन बोटो में बिकम कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड में अगर ये Ka1 और K2 लिखता हूं, अगर ये Ka1 और K2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूज कम हो ज्यादा हो जो भी हो, स्पीसीज कम हो ज्यादा हो जो भी हो, बोलता हूँ सारा एक्सप्रेस यहां से आएगा, कार्बोनेट बहुत कम रहेगा नॉर्मली, जो भी हो, पर इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, K1 K2 होने का मतलब क्या है कि अगर H2CO3 माइनस है तो H प्लस भी है, HCO3 माइनस भी है, CO3 2 माइनस भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यस और नो? बच्चों लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं इसमें एक चीज और ऐड भी कर सकता हूं, एक्चुअली ये जेई में पूछा नहीं था, पर इसमें मैं OH माइनस भी ऐड कर सकता हूं, बिकॉज अगर H प्लस है तो OH माइनस भी रहेगा, H प्लस है तो OH माइनस भी रहेगा, यस और नो? यस और नो? H प्लस और OH माइनस इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। अब ना फॉर द सेक ऑफ इट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एंड मेरे को लगता है अभी तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जब 12.5 मिलीमोल ले लेंगे तो मेरा ये तीसरा इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा, जहां पर आई कुड टेक कि इसका 10 मिलीमोल में ये 2.5 मिलीमोल ले लिए हैं, तो ये 2.5 बचेगा और ये 2.5 बनेगा, और इसका फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस log ऑफ 2.5 upon 2.5, which will be equal to pKa2, which will be equal to pKa3, sorry, yes or no? ये समझ में आ रहा है कि यू वांट मी टू राइट इट अगेन? सर प्लीज रिपीट। When you have added 125 ml, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया जो मैं लिखवाया हूं, बिकॉज इसका बहुत रेलेवेंस है। ट्वेल्व एंड हाफ मिलीमोल जब OH माइनस डाला, जब 12.5 मिलीमोल OH माइनस डाला तो 10 मिलीमोल तो चला गया, इसको यहां तक कन्वर्ट करने में ये 5 मिलीमोल बना, और उसके बाद जो 2.5 मिलीमोल बनता है, तो 2.5 मिलीमोल बनता है, ये बचता है, वो ऐसा करेगा फॉर द लास्ट केस। यस और नो? Yes, sir. So this is the buffer between these two, which is equal to pK3 plus log of 2.5 and a half, which is pK3 11। इसके बाद ना मैं सीधा ग्राफ में आकर के इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चे लोग, इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। जितना भी तुम इक्वेशन लिख लो, जितना भी तुम फॉर्मूला बता दो, मैं तुमको बताता हूँ, जितना हम लोग ग्राफ से सीखते हैं ना, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट। Let me draw a graph of this titration curve, and chances are you'll understand everything. Can I remove this clutter? I just want to simply remove this clutter and talk about the titration curve. Can I remove it? Yes, sir. You'll want to keep these results in mind. You'll want to keep these results in mind. You'll want to remember the species which were there, which I can obviously, put here in a summarized manner. Point A, you had pH is equal to 2, courtesy only carbonic acid was there. Point B, you had pH is equal to 3 because it was a mixture of H2CO3 and HCO3 minus, sorry, H3PO4 and H2PO4 minus। बच्चे लोग हाँ ना बोलते रहो।
pH 5 था when you had H2PO4 minus only. pH 7 था when you had H2PO4 minus and HPO4 minus minus. If I do a mistake somewhere, please correct me. यहां तक लगता है मैंने ठीक लिखा है सब कुछ। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, एक बार ना यहां तक प्लॉट बनाते हैं और तुमको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। पहला बात तो आई माइट हैव टोल्ड यू इन द पास्ट कि हमेशा टाइट्रेशन कर्व इज ड्रॉन लाइक पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, because when you add an alkali, the pH will increase. It's always good to draw a pH graph or a graph which is moving up. So this is in ml. So this is like 25, 50, 75, 100 and 125. I could piece it out a bit, or fine. I think this is pretty comprehensive. I suppose take this as 14. So करीब यहाँ पर मान लो 7 आता है और 7 में सपोज ये करीब करीब 6.5 आता है, तो मैं इसको छोड़ने से 3 ले लेता हूँ। It's best on a graph paper. I keep on saying this. So this is 1, which I might not need. This is 2, which I need. This is 3. This is 4, which I might not need. This is 5, which I need. This is 6, which I might not need. All right. This is 8, which I might not need. This is 9, which I need. 10, which I might not need. This is 11, which I need. ठीक है बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ ये सर। है 0 ml पे, ये है 0 ml पर, ये है 0 ml पे, ये है 0 ml पर और ये है 25 ml पर, है ना? और ये है 50 ml पर और ये है 75 ml पर और ये है 100 ml पर और ये है 125 ml पर। If I'm doing a mistake somewhere, please stop me. I think I'm going all right so far. So this is point A, B, C, D, E, F. Yes or no? Yes sir. And now you realize you need more points. I mean, because with these points, you're not sure about the nature of the graph. A mature person might just draw a straight line. Let me tell you, I'll not draw a straight line. I'll never draw a straight line. I'll never draw a straight line. I'll always draw it in this manner, without enough readings, and with my aptitude and my understanding of chemistry. And I would simply love if somebody, could explain it to me. This would be like absolutely delightful if somebody could explain why am I drawing it in this manner and not drawing a straight line. सर क्योंकि बफर सॉल्यूशंस फॉर्म हो रहा है जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा। Please tell me your name. You are very close to the right answer. Please tell me your name. Very, you are very close to what I wanted to hear. The moment you add 1 drop of alkali to phosphoric acid, the moment you add 1 drop of alkali to phosphoric acid, you drop 1 drop of alkali.
you drop 1 drop of alkali and you have a mixture of a weak acid and salt with a strong base, or you have a mixture of this and this, एक ड्रॉप alkali डालते ही एक बफर बन जाता है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर के सॉरी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये क्या है, यहां पर सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड है, और यहां पर क्या है, यू हैव ओनली H2PO4 minus, you will want to call it the first equivalence point, और इसी का मेरे को लॉजिकल आंसर चाहिए, मेरे को उसका लॉजिकल आंसर चाहिए, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई किताब में नहीं है एट योर लेवल। यहां से यहां तक एक बफर है, यहां से यहां तक एक बफर है, ये एक ड्रॉप NaOH डालते ही बफर बन गया है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और ये बेस्ट बफर कब है, ये बेस्ट बफर है बी पर, ये बेस्ट बफर कब है, ये बेस्ट बफर है बी पर, जबकि ये भी 2.5 मिलीमोल है और ये भी 2.5 मिलीमोल है। बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन these two are equal, buffer capacity is maximum when these two are equal, and when the buffer capacity is maximum, when the buffer capacity is maximum, this would be the most gradual, it would be from this point to this point, you know, it would be steep, the steepness would increase as you move to the right or to the left of it. When you move to the right of it, you have this ratio increasing. When you move to the left of it, you have this ratio decreasing. When you move to the right of it, you have this ratio increasing. When you move to the left of it, you have this ratio decreasing. Till this point, where all of this gets over and you have only salt and you're not taking salt hydrolysis, for some reason I'll come to that again. But don't you think, from this point to this point, from this point to this point, if it's a buffer, two things. One, you can't draw a straight line. From this point to this point, if it's a buffer between these two, you can't draw a straight line because a buffer will not have an abrupt or a steep increase in pH. So you'll have to make it, you know, gradual, where this would be the most gradual point where the buffer capacity is maximum, and both to the left and to the right of it, the steepness will increase. So this would be like the most plateau-like region, and this would be the most steepest, the most steepest position. यहाँ पर slope सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर slope सबसे कम होगा. Here it will be almost the best buffer possible. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। अब मैं एक बात तुम लोग को बोलूं, when you take phosphoric acid in water, what will be the species present? The species present will be phosphoric acid, H2PO4 minus, HPO4 minus minus, PO4 3 minus, H plus and OH minus. Yes or no? Yes. यस सर। तुम लोग एक बात ना बहुत ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, इस पॉइंट पर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो। मेरे को एक बात बताओ, इसके टू द इमीडिएट राइट एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट, इसके टू द इमीडिएट राइट you will write pH is equal to pKa2 plus log of HPO4 minus minus upon H2PO4 minus, and इसके immediate left you will write pH is equal to pKa plus log of H2PO4 minus upon H3PO4. Tell me yes or no. यस सर। ठीक इसके पहले भी एक बफर है, ठीक इसके बाद में भी एक बफर है, ठीक इसके पहले भी एक बफर है, ठीक इसके बाद में भी एक बफर है। ये जो बफर है ये इन दोनों के बीच में है, और यहां से जो चालू होता है वो इन दोनों के बीच का बफर है। यस और नो?
बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। तुम एक काम करो, तुम मेरे को ना एक प्रॉब्लम दो, तुम मेरे को एक प्रॉब्लम दो जहां पर H2PO4 माइनस है और उसके साथ में H3PO4 है, कितना भी नेग्लिजिएबल हो, कितना भी नेग्लिजिएबल हो, यू गिव मी ए प्रॉब्लम जहां पर ये दोनों साथ दोनों है और मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यस और नो? या तुम मेरे को एक प्रॉब्लम दो जहां पर H2PO4 माइनस है और HPO4 माइनस माइनस है। जस्ट टू मेक इट सिंपल आई राइट इट लाइक दिस। जब फॉस्फोरिक एसिड लेते हो पानी में, जब फॉस्फोरिक एसिड पानी में लेते हो तो क्या क्या रहता है? फॉस्फोरिक एसिड रहता है, H2PO4 माइनस रहता है, H2PO4 माइनस माइनस रहता है, PO4 3 माइनस रहता है, H प्लस रहता है, OH माइनस रहता है, सब रहता है। तुमको एक प्रॉब्लम दिया है जहां पर बोलता है फाइंड द पीएच ऑफ, यू आर टोल्ड फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 molar NaH2PO4. You know, this is a rigged problem. It's a rigged problem. Do you understand what's a rigged problem? बाबा जब तुम NaH2PO4 लोगे, जब तुम NaH2PO4 लोगे तो NaH2PO4 में H2PO4 माइनस रहेगा और उसके साथ में H3PO4 भी रहेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस, और H2PO4 माइनस माइनस भी रहेगा बिकॉज ऑफ K2. टेक योर टाइम एंड टेल मी, if there was a question in JE which told you कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालने से कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2CO3 भी होता है, CO3 2 माइनस भी होता है, HCO3 माइनस भी होता है, H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है, K1 लिख रहे हो, K2 लिख रहे हो, K3 लिख रहे हो, तो अगर पानी में फॉस्फोरिक एसिड है तो ये भी है और ये भी है और ये भी है, सब कुछ है। तुमको क्वेश्चन क्या दिया है? तुमको दिया है क्वेश्चन फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaH2PO4। तुम इसके साथ में फॉस्फोरिक एसिड दे दो, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तुम इसके साथ में Na2HPO4 दे दो, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। यस और नो? यस सर। टेक योर टाइम। तुमको इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसका पीएच हमेशा कांस्टेंट होना ही था। It's only one point, it's only one point where the concentration of this is maximum, and the concentration of this will be maximum only if the concentration of phosphoric acid and the concentration of HPO4 minus minus is minimum and negligible. This had to be a fixed constant value of pH. pH इससे थोड़ा कम होता so it would be a mixture of these two. pH थोड़ा से ज्यादा होगा it would be a mixture of these two. इन दोनों के एक फॉर्मूला है मेरे पास, इन दोनों के मेरे पास एक फॉर्मूला है pK1 प्लस लॉग ऑफ, है कि नहीं है बताओ? इन दोनों के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। आई थिंक तुम लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट का, मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट का कि यहां पर हम लोग pK1 प्लस pK2/2 क्यों यूज करते हैं? वाई आर वी स्टक अप विथ अ फॉर्मूले which otherwise is derived with a lot of mathematics in the textbook. I would want to cut it short using logic. It had to be a fixed value independent of concentration. ये 0.1 मोलर हो या 0.2 मोलर हो या 0.4 मोलर हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज पहला बात तो सिर्फ NaH2PO4 पानी में रहता नहीं है, पानी में NaH2PO4 के साथ में H3PO4 भी रहता है और HPO4 माइनस माइनस भी रहता है। अगर H3PO4 रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर HPO4 माइनस माइनस रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग ये दोनों फॉर्मूले लगाते हैं टू द पॉइंट immediately right or to the left of it. This is the point when we say कि we take only H2PO4 minus into consideration because this is when this is maximum and the concentration of these two are negligible. थोड़ा सा होता तो ये लगाते, थोड़ा सा होता तो ये लगाते। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। मेरे पास ना उतना वैल्यूज नहीं है, पर अगर मेरे पास और वैल्यूज होता, सोचो
अगर मेरे पास और वैल्यूज होता, यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू होता, यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू होता, बी में मैं क्या लगा रहा हूँ, बी में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बी में ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जहां पर मैं 2.5 ले रहा हूँ, तो pk1 का वैल्यू हो जा रहा है, यस और नो, विच इज 3। पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरा ये इक्वेशन से काम होता है कि नहीं होता है, बोलो। और फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक मेरा ये वाला इक्वेशन से काम हो जाएगा। You can take your time and ask your doubts. I would invite questions now. I would invite questions now because I've told you two things. One, I've given you a real exam question which tells you carbon dioxide dissolved in water will contain all these species. So this would give me a question like 0.1 molar NH2PO4 with any amount of phosphoric acid. And I apply this formula. This would give me 0.1 molar of NaPH2PO4 with any amount of Na2HPO4 and I'll apply this formula. तुम लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। और जब प्रॉब्लम है ना only NaH2PO4 only, दिस इज अ रिग्ड प्रॉब्लम। इट्स अ रिग्ड प्रॉब्लम मतलब इसका आंसर पहले से ही फिक्स्ड है। जैसे K1 K2 का वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू पहले से ही फिक्स्ड है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ एक पॉइंट ही होगा, तुम एक चीज सोचो, और मैं ना यहाँ पर अगर तीनों इक्विलिब्रियम वापस लिखो कि H3PO4 से H2PO4 माइनस हो रहा है और मान लो H2PO4 माइनस माइनस हो रहा है, तो नेचुरली इसका मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों का मिनिमम और नेग्लिजिबल होना जरूरी है। और इफ यू वांट मी टू स्पीक अ सिंपलर लैंग्वेज, अगर ये थोड़ा सा भी रहेगा, अगर ये थोड़ा सा भी रहेगा तो इन दोनों का बफर का इक्वेशन लगाऊंगा, अगर ये थोड़ा सा भी रहेगा तो इन दोनों का इक्वेशन का बफर लगाऊंगा, इन दोनों का बफर का इक्वेशन लगाऊंगा, यस और नो। अगर मैं ये बफर भी नहीं सोच रहा हूं, ये बफर भी नहीं सोच रहा हूं, इन दोनों को मैं नेग्लिजिबल और इक्वल मान रहा हूं, तो इसका pk1 प्लस pk2 कैसा आएगा मैं बताता हूं। कैसा आता है बताऊंगा। टुडे टेल यू। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। अच्छा, मेरे को लगता है इसको लिखने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे को लगता है इसको लिखने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टेक योर टाइम, K1 K2 ऐसा दिखेगा। I need to justify the amphiprotic species का ये फॉर्मूला आया कैसे। किताब में कभी कभी एजम्पशन लेता है और किताब में कभी कभी बोलता है कि इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन बराबर बराबर होता है। एक्चुअली कुछ मानते नहीं है, कुछ एजम्पशन लेते नहीं है। ठीक है, जो तीन अलग अलग स्टेप में हम लोग लिखते हैं ना, ये कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम है, और इस कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि इस पॉइंट का मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों पॉइंट मिनिमम और नेग्लिजिबल हो। I mean, had I been a little better personally been acquainted with the concept of maxima minima, I would have used pure mathematics to explain this term and this fact to you, that when we talk about only NH2PO4 or only Na2HPO4 or only sodium bicarbonate or only amphiprotic species, I'm talking about a case where it's a fixed constant value. तो चलो हाँ ना बोलो। तो तुम लोग को एक बात समझ में आ रहा है, मेरा सब कुछ करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा सब कुछ करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता। अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी फॉस्फोरिक एसिड देते तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता, तुम मेरे को थोड़ा सा भी HPO4 माइनस माइनस देते तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता, पर तुम मेरे को बोल रहे हो खाली इसका पीएच निकालो।
So you are talking about the only fixed point in the titration curve where the concentration of this is maximum and the concentration of its so-called hydrolysis product and its so-called dissociation product is equal. Now, if I take these two equal, which is the need of the hour? Yes or no? If I take these two negligibly equal, if I take these two negligibly equal, क्योंकि थोड़ा सा भी ये रहता तो इसके नीचे का पॉइंट होता, मैं ये फॉर्मूला यूज करता, थोड़ा सा भी वो होता उसके ऊपर का पॉइंट होता, मैं वो फॉर्मूला यूज करता। इट्स अ कंटीन्यूअस ग्राफ, सिर्फ एक पॉइंट का मेरे को वैल्यू निकालना है, जहां पे इन दोनों को अगर मैं बराबर ले लूंगा तो k1 into k2 would be h plus square. Yes or no? कैंसिल हो जाएगा। तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ तो ना इसमें बिना मतलब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इसमें बिना मतलब कोई एजम्पशन नहीं लेना चाहिए, इसको प्योर लॉजिक से समझना चाहिए कि तुम बूंद बूंद करके OH माइनस डाल रहे हो, और जब तुम बूंद बूंद करके OH माइनस डाल रहे हो तो पहले ये इक्विलिब्रियम धीरे 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 यहाँ आता है, एक पॉइंट आता है जब दोनों बराबर हो जाता है, जब दोनों बराबर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे सबसे अच्छा बफर होता है, मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकता हूँ, और जब ये सबसे अच्छा बफर होता है तो ये बिल्कुल प्लेटो जैसा हो जाता है, उसके लेफ्ट में उसके राइट में इसका स्लोप ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर इसका स्लोप सबसे ज्यादा रहेगा बिकॉज यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पर वो बफर नहीं है, बाकी यहां से लेकर यहां तक ही पूरा बफर है, सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पर ये बफर नहीं है, फिर यही एक पॉइंट है जहां पर ये बफर नहीं है, यहाँ पर ये कैसे बफर है, यहाँ पर ये बफर है H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस माइनस, और इन दोनों का बेस्ट बफर है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लैट है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज pKa2 plus log of this upon this, which is pKa2 only, which is 7. Yes or no? तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ सर। अच्छा ई में भी, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, और इसको हम लोग सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट में भी क्या है, व्हेन यू गिव मी find the pH of 0.5 मोलर 0.8 मोलर, कोई भी वैल्यू तो क्या फर्क पड़ता है, it's Na2HPO4, why Na2HPO4, it's only HPO4 minus minus, you give me some H2PO4 minus तो मैं इसके नीचे का वैल्यू निकालूंगा, you give me some PO4 3 minus मैं इसके ऊपर का वैल्यू निकालूंगा। yes or no? तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है, स्पेस का भी लिमिटेशन है, पर मैं अब ई के लिए बताता हूँ, अब मैं ई के लिए बताता हूँ। आई थिंक यू आर हैप्पी विद दिस फैक्ट कि व्हेन यू रियलाइज k1 into k2 was equal to h plus square, this was only a formality that h plus will be equal to k1 into k2 and minus log of h plus would be like minus half log of k1 into k2, which will be pk1 plus pk2 by 2. Yes or no? तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ सर। पॉइंट ई में क्या हो रहा है, पॉइंट ई में द क्वेश्चन इज 0.5 मोलर Na2HPO4। अब जो सिर्फ Na2HPO4 है, मैं ना एक काम करता हूँ, HPO4 माइनस माइनस का हाइड्रोलिसिस करके दिखाता हूँ, और इसका हाइड्रोलिसिस में A माइनस प्लस वाटर HA, इसमें ना यू नीड टू बी अ लिटिल गुड एट इट, यू नीड टू बी लिटिल गुड एट इट, like I always do, acetic plus water becoming acetic acid, A minus plus water becoming HA, you need to be a little good at it. All right, so that you give it any anion, you can very likely simply do it. So this is KH for HPO4 minus minus, and this is Ka3, this is Ka3, this is Ka3, yes or no? OH minus भी यस देता है, सर। H plus भी देता है, एम्फीप्रोटिक है। तुम मेरे को इन दोनों का एक मिक्सचर दो, तुम मेरे को इन दोनों का मिक्सचर दो, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, pH is equal to
pKa2 plus log of H2PO4 minus upon HPO4 minus minus upon H2PO4 minus. Yes or no? तो मेरे को इन दोनों का मिक्सचर दो. I will write for another buffer which will be pKa3 plus log of PO4 3 minus upon SPO4 minus minus. Yes or no? Take your time. Can I rub it off? Yes, sir. If you still have some doubt, I'll naturally want to help you. But what I want at the end of the day is, at E, when you write pH is equal to pKa2 plus pKa3 by 2, which I believe is 7 plus 11 by 2, which is 9, you do it without any mathematics, without any assumption, without any quadratic equation. You understand? Between D to E, it's one kind of a buffer. Between E to F, it's another kind of a buffer. D to E, it's a buffer of HPO4 minus and H2PO4 minus minus. Between E to F, it's a buffer of H2PO4 minus and PO4 3 minus. Yes or no? Yes, sir. चलो हाँ बोलो. Yes, sir. Yes. ये इनिशियल पॉइंट है. ये क्या है? जब H3PO4 और H2PO4 माइनस बराबर बराबर. ये क्या था? जब सिर्फ H2PO4 माइनस था. तो जब सिर्फ H2PO4 माइनस था, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट था, मैं फास्फोरिक एसिड और HPO4 माइनस माइनस को बराबर ले लिया. ये क्या है? जब H2PO4 माइनस इज इक्वल टू HPO4 माइनस माइनस. और ये क्या है? when you have only HPO4 minus minus. So when you have only HPO4 minus minus, you will believe इसका जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, which is H2PO4 minus, and इसका जो K3 प्रोडक्ट है, PO4 3 minus minus, दोनों बराबर है. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Write for K2 and K3. Now we write for K2 and K3. For E, which is the second equivalence point, when it's HPO4 minus minus only, it means you believe in H2PO4 minus and PO4 3 minus are equal, because अगर ये दोनों होता तो एक बफर का फॉर्मूला लगता जो कि इसके नीचे का पार्ट होता. अगर ये दोनों होता तो एक बफर का फॉर्मूला होता जो इसके ऊपर का पार्ट होता. अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरे पास तो मेरा कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है. इट्स लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सैचुरेशन कर्व जहां पे आई टेक दिस टू इक्वल एंड सपोज इफ आई राइट K2 as H plus and HPO4 minus minus upon H2PO4 minus, and if I write K3 as H plus and PO4 3 minus and HPO4 minus minus, my consideration is I am taking these two to be almost equal. Again, when I take K2 into K3, these two would cancel out, HPO4 minus minus, and because I've taken these two to be equal, this will be H plus plus square. Yes or no? बच्चों हाँ ना बोलो. हाँ, सर. और ये ऐसा स्टेयरकेस फिनोमेना आएगा, ऐसा स्टेयरकेस फिनोमेना आएगा, ऐसा स्टेयरकेस फिनोमेना आएगा. I want to carry on for another half an hour if it's fine with everyone. I want to carry on for another half an hour if it's fine with everyone, or we can resume problem solving for tomorrow as well. I would want to go by your call. मेरे को लगता था मैं 1 घंटे में सब पढ़ा भी दूंगा, सब डिस्क्राइब भी कर दूंगा, pk1 plus pk2 by 2 का कंसेप्ट भी समझा दूंगा और क्वेश्चंस भी समझा दूंगा. तो यू नो आई वाज काइंड ऑफ overestimating myself,
ये एग्जैक्टली काम आता है अमाइनो एसिड्स में। जब अमाइनो एसिड्स में आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पढ़ते हो ना, pk1 प्लस pk2/2, मैं उसका वीडियो भी दिया था, पर उसमें उतना इलैबोरेट नहीं था। और मेरे को हमेशा लगता है कि स्टूडेंट को ना अगर एक टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करने दिया जाए या रैंडमली क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू 90 ml, तो 90 ml के लिए योर माइंड शुड वर्क लाइक 9 मिलीमोल है, 5 मिलीमोल पहला यूज हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड को कंप्लीट कर देगा। फिर 4 मिलीमोल विल कन्वर्ट H2PO4 minus to HPO4 minus minus, it will be pK2 plus log of HPO4 minus minus upon H2PO4 minus in the ratio 1:4, 4:1 rather। खैर जो भी है, you can tell me only if you insist I want to carry on for another half an hour, I can carry on for another half an hour. Or what you can do is, you can look at these questions at your convenience, and I can do it next day as well. Yes. I did not get this. Yes, Yes, sir. I still did not get this. Yes, you want me to carry on, or we'll want to do it tomorrow? That is it. All right, there is a break of a couple of minutes and we'll resume. हाँ, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? 2-4 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं। दो चीज और सिखा देता हूँ, 2-3 चीज और सिखा देता हूँ, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो सर 4 मिनट का ब्रेक है, विल रिज्यूम इन 4 minutes. All right, we want to resume. I just want to tell you a couple of more things which will help in finding the concentration of different species and say the pH of solution of a dibasic or tribasic acid. I hope you're all there with me. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। So now, if suppose you have a tribasic acid H3A giving you H plus and H2A minus, and H2A minus giving you H plus and HA minus minus, and HA minus minus giving you H plus and A minus 3, and you have a given amount of the concentration which is C. This goes by CH, this is CH, CH. Now, because the values of Ka1, Ka2, Ka3 would be, say, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 11. Again, Ka1 is 1,000 times more than Ka2, which is much more than Ka3. If it's Ka1, much more than Ka2, much more than Ka3, like always, you're given 0.1 molar of this. You know how to calculate H plus. You calculate H plus as CH, which is C times H, and you calculate this H as root over of Ka by C, and this has to be Ka1 because this will be the principal source of H plus. If you write KH as CH upon C1 minus H is almost equal to CH square. H is equal to root over of K1 by C, and naturally CH would be root K1 into C. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Now let's talk about K2. K2 would be equal to H plus HA minus minus upon H2A. This is the principal source of H plus. कॉमन एन इफेक्ट है, उतना डिसोसिएट तो ये भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि H प्लस जो है ना वो यही है H प्लस, यही H प्लस है। H प्लस का वैल्यू हम लोग यही लेंगे, यहाँ पे जो H प्लस निकल रहा है वो नेग्लिजिबल है। And these two are equal, these two are equal, these two are equal, these two are equal. ये भी CH है, ये भी CH है। अगर ये दोनों equal है, then HA minus minus will always be equal to Ka2. Keep this in mind. It's a very important result. It's a very important result. Keep this in mind.
And if you have to calculate A minus 3, this A minus 3 could be calculated as KA3 into HA minus minus upon H plus. बच्चे लोग हाँ 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 ना बोलो. Come on, tell me. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. But will be like KA3. I've told you HA minus minus will be equal to KA2, and this will be root over of KA1. तो ये जो फॉर्मूला किताब में दिया रहता ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये समझ लो. ये तुमको पहला फॉर्मूला तुमको याद करना नहीं है. पहला फॉर्मूला तुम पहले दिन से जानते हो, h plus is root over of KA1 into C. अब मैं प्रॉब्लम क्या देता हूँ? मैं प्रॉब्लम देता हूँ you have 0.1 molar of H3PO4. अब यहाँ से तुम H plus निकालो, उससे pH निकालो, फिर H2PO4 माइनस निकालो, फिर HPO4 माइनस माइनस निकालो और PO4 3 माइनस निकालो. I think you all can hear me loud and clear. बच्चों लोग हाँ ना बोलो. हाँ, sir. हाँ सर. क्या करेंगे? H plus के लिए root over of Ka1 into C, which is so 10 to the power minus 5 into 0.1, 10 to the power minus 6. Root of this is 10 to the power minus 3. pH is equal to 3. हाँ ना बोलते रहो. हाँ सर. हाँ, sir. H2PO4 minus would be the same as H plus because I believe these two are almost equal. HPO4 minus minus के लिए this is equal to K2 and PO4 minus 3 के लिए K3 is 10 to the power minus 11. What is K2? It's 10 to the power minus 8. What is root over of K1 into C? Just 10 to the power minus 3. This will be 10 to the power minus 16. Yes or no? Yes, sir. मैं कभी कभी यहाँ पे गलती भी कर देता हूँ. If I have done a mistake, please correct me. Looks all right too. Let's take up the remaining questions. I can remove this clutter. So 1 minute. Take your time. Let me know once you're done. ये एक बहुत कॉमन रिजल्ट है कि पॉलीप्रोटिक टाइट्रेशन में जो दूसरा एनायन बनता है उसका वैल्यू हमेशा K2 के बराबर रहता है. बिकॉज व्हेन आई राइट K2 as H plus HA minus minus upon H2A minus, ये दोनों को मैं इक्वल लेता हूँ हमेशा. ठीक है. Let me know once you're done.
I'm going to remove this clutter. Yes, sir. You all copy Yes, it sir. down. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So question 2 में they wanted to find pH of 0.1 molar NaH2PO4 and 0.2 molar Na2HPO4 pKa1 3 pKa2 7 pKa3 11 तुमको समझ में आता है ये 0.1 0.2 का तो कोई मतलब नहीं है बिकॉज NaH2PO4 के लिए I let a formula like pK1 plus pK2 by 2 and इसके लिए I let a formula like pK2 plus pK3 by 2. Are you there with me? Yes, sir. Yes, sir. This will be 3 plus 7 by 2 equal to 5 and 7 plus 11 by 2 which will be equal to 9. We'll talk about question 3 now. We have to find pH of a mixture of 0.4 molar bicarbonate and 0.2 molar carbonate. K1 is 4 into 10 to the power minus 7. Ka2 is 4 into 10 to the power minus 11. Now tell me, what is this? What is this mixture? Buffer. Buffer. Now, when it's a buffer and I've been given a mixture of two species, तो ना मैं बफर का फॉर्मूला लगाऊंगा. और ये किसका बफर है? पहला वाला का कि दूसरा वाला का? दूसरा वाला का. दूसरा वाला का. तो इसके लिए मेरा पीएच क्या निकलेगा? इसका पीएच मेरा निकलेगा pK2 plus log of salt by acid. यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है? HCO3 minus becoming H plus and CO3 minus. Yes or no? Minus log of this will be 11 minus log 4 plus log half would be like minus log 2 and this will be like 11 minus 3 log 2 which will be almost 10.1 given the fact log 2 is almost equal to 0.3. Yes or no? So option B would look all right. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ, sir. हाँ, sir. 4 एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. 4 एक अच्छा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 4 एक अच्छा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 4 एक अच्छा प्रॉब्लम है. पर तुम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी मेरे को अगर सिर्फ बाइकार्बोनेट देता, अगर मेरे को बोलता फाइंड पीएच ऑफ 0.4 मोलर बाइकार्बोनेट, मेरे को मिक्सचर दिया है तब मैं बफर लगा रहा हूं. पर अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन 3 में had it been find the pH of 0.4 molar bicarbonate, my value would have been pK1 plus pK2 by 2, and had it been pH of 0.2 molar CO3 2 minus, my formula would have been 7 plus half pK2 plus half log C. Yes or no? ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, इसके लिए मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाता, इसके लिए मैं लगाता एम्फीप्रोटिक वाला फॉर्मूला, और जब मिक्सचर है तो मैं बफर का फॉर्मूला लगा रहा हूं. यस और नो? Yes, sir. क्वेश्चन 4 इज इंटरेस्टिंग दो. क्वेश्चन 4 अच्छा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 4 का जो आंसर बताएगा इट विल बी वेरी वेरी डिलाइटफुल. क्वेश्चन 4 में इट्स अ मिक्सचर ऑफ 20 ml of
0.1 molar H3PO4 and 20 ml of 0.1 molar NH3PO4 देगा, PO4 3 माइनस देगा, एक ही बात है। मेरे को लग रहा है ऐसी क्वेश्चन है, yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। मैं बार बार बोलता हूँ, if Ka1 is much more than Ka2, which is much more than Ka3, this will mean out of these species, this is the strongest acid and this is the strongest base. Yes, sir. So don't you think when you take a mixture of these two, this will have a reason to move forward and this will have a reason to move back? ये 2 मिलीमोल है, ये भी 2 मिलीमोल है, इसका 2 मिलीमोल आगे आएगा तो ये 2 मिलीमोल बनेगा, और इसका 2 मिलीमोल अगर पीछे जाएगा तो ये 2 मिलीमोल बनेगा। यस और नो? और मेरे को मिक्सचर मिलेगा इसका 2 मिलीमोल का और इसका 2 मिलीमोल का, जिसका पीएच क्या होगा, pK2 प्लस log ऑफ 2/2। तो चलो हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इस किताब में ना हो सकता है तुमको ऐसा एक फॉर्मूला दे दे, ऐसा एक फॉर्मूला दे दे, एंड सो मेनी टाइम्स यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्या हो रहा है, फॉस्फेट रेडिकल आपस में रिएक्ट कर रहा है, वो द हेल इज गोइंग ऑन। इट्स अबाउट K1 K2 K3 differing so much, K1 much more than K2, much more than K3, that this is very this is the strongest acid among all these species and this is the strongest base among these species. Expect these two to interact in the manner कि 2 मिलीमोल आगे चला जाएगा, 2 मिलीमोल पीछे चला जाएगा, और इसका 2 बचेगा, बफर बन जाएगा, and so will be pK2 only. Yes or no? Which is option C. Yes or no? Yes sir. Yes sir. I can remove this letter now. 1 minute. Take your time. ये 4 वाला अच्छा प्रॉब्लम है, 4 वाला पर्टिकुलरली अच्छा प्रॉब्लम है। और ये भी जरूरी है कि अगर तुम फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हो ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग फॉर दिस फॉर्मूला। Done sir. So 1 minute. So you want to know it as a problem where you have to apply this in a conceptual manner. अगर K1 is much more than K3, this means a mixture of these two and this will move forward and this will move backward. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। Okay, rub it off. Yes sir. तुम इसका K1 को आगे लेके जाओगे और इसका K3 को पीछे लेके जाओगे, 10 to the power +11, 10 to the power -5. It's a very big value.
पांच नंबर में H2CO3 के लिए Ka1 का वैल्यू दिया है 4 into 10 to the power minus 7, Ka2 का वैल्यू दिया है 7 into 10 to the power minus 11. You have to find HCO3 minus for 0.025 molar H2CO3. Tell me what will be the answer. Come on, who will tell me? Instead of H3A, अगर वो H2A होता और मैं इसको ऐसे लिखता, and again, believing Ka1 is much more than Ka2, and all of H plus will come from the first equation only, and I write this as CH and CH, and I write this as CH, and this as CH. Now, don't you think this will be equal to K2 only? Because when I write K2 is equal to H plus CO3 2 minus upon HCO3 minus, I'll believe that these two are almost equal. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. And HCO3 minus and H plus both would be equal to root over of K1 into C only. Now this is 25 into 400, 0.1. 10 to the power minus 4 आता है क्या देखो तो. हाँ सर. तो इसमें 5 और 6 दोनों ही सॉल्व होंगे. 5 में बाइकार्बोनेट पूछ रहा है, which will be 10 to the power minus 4. 6 में pH पूछ रहा है, which is equal to 4, और कार्बोनेट पूछ रहा है, which is equal to K2, which is equal to. I prefer doing it in terms of H3A because it will cover the spectrum involving a tribasic acid as well, but for dibasic acid the results will be the same. Like यहाँ पर HA minus minus is equal to K2, यहाँ पर CO3 2 minus will be equal to K. Yes or no? We will want to talk about 7, 8, and 9. Let me know once you're done with this. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ हाँ सर. सर. एक पॉलीप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन में
जो दूसरा वाला आया था उसका वैल्यू K2 के बराबर होता है. आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर. So this could be like HPO4 minus for phosphoric acid or COC2 minus for C2O4 minus for auxiliary acid. है ना? Can we move on? Yes. I want more people to respond to me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Priti sir, keeping good health now? Yes, sir. स्कूल मत जाओ, छुट्टी ले लो, टेक रेस्ट. स्कूल जाने का भी पता नहीं क्या है तुम लोग का ना. प्रैक्टिस हो गया अभी. 7 नंबर. 7 नंबर भी एक आउटसोर्स प्रॉब्लम है. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. H3A के लिए Ka1 का वैल्यू है 10 to the power -5, Ka2 है 10 to the power -9 और Ka3 है 10 to the power -13. ठीक है. ठीक है. बोलता है फाइंड pH of 0.1 molar M where X is, so basically they want minus log of find pH of 0.1 molar H3A where pH as expected is minus log of X and X is the ratio of A3 minus upon HA minus B. So this would right away come handy. A3 minus upon HA minus 2. And you can right away start with Ka3 is equal to H plus A3 minus upon HA minus 2. Yes or no? And A3 minus upon HA minus minus, which will be Ka3 upon H plus into HA minus minus करके तब हम लोग A3 minus निकालते हैं. तो ये जो रेशियो होगा ये सिर्फ Ka3 upon H plus ही होगा, which will be like Ka3. And remember H plus as root over of Ka1 into C. ठीक है, I'm doing it all right. And minus log of this will be so what I want to tell you is these formulae are very, fundamentally derived. These are questions which will not bother you if you remember a few things. Like for polyprotic titration, you always take H plus as root over of K1 into C, and you take HA minus minus as K2. In this case, K2 is not required because they want the ratio only. We'll want to talk about question 8 now. Eight is relatively simpler problem. It is relatively simpler problem given the time I've spent over talking about the equilibrium moving forward and backward. Can I remove this clutter? Are you done with 7? Yes, sir. Can I remove this clutter? Are you done with 7? Yes, sir. Rest of you? Yes, sir. Yes, sir. I'm prone to some calculation mistakes at times. So if you find something
erroneous, you will want to tell me. 8 में क्या बोलता है कि 50 ml of 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट है। जल्दी से बताओ कितना मिलीमोल होता है, बताओ कितना मिलीमोल होता है, कितना मिलीमोल होता है? 2.5 मिलीमोल सर 2.5 2.5 मिलीमोल। और HCl कितना है? 4 मिलीमोल 4 मिलीमोल। Now if you believe that H2CO3 becoming H plus and HCO3 minus becoming H plus and CO3 2 minus, and these set of equilibrium could be controlled by an external strong acid and weak acid. The problem is because we are used to writing it as step 1 and step 2, at times we forget that this is a continuous thing. And a lot of H plus and a lot of H plus from a strong acid, a lot of H plus from the strong acid is bound to move it back. Yes or no? Yes or no? यस सर Yes, sir. तो अगर ये 2.5 था और ये 4 था तो ये खत्म हो जाएगा, ये 1.5 बचेगा और ये 1.5 बनेगा। और अगर ये बचा है स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये इसको भी पीछे ले जाएगा। 2.5 बनेगा ना? मतलब 2.5 ये था तो 4 minus 2.5 is 1.5 less। हाँ Formed सर वो 2.5. HCO3 माइनस I'm so sorry। and 2.5 तो 1.5 बचा है, उसके साथ में ये 1 मिलीमोल लेफ्ट होगा। और 1.5 बनेगा। क्या बनाइए, क्या बनाइए? Buffer. Buffer। Now you need to be, very comfortable with this. We want to feed the values now. हेलो, हाँ अभी क्लास चल रही। हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तो पढ़ा रही हूँ, इतना लंबा क्या होगा? PK1 वैल्यू गाइस, बोलो। ठीक है, if this is 1.5 and this is 1/1.5, I can just like 6.35। हाँ 6.173 आ जाएगा सर। हाँ 6.173 is the right answer। I can write as plus log of 1/1.5 plus log of 2/3, which will be 6.35 plus log 2 minus log 3. This will be almost equal to 6.173, which is option D. So this will be manageable. This will be manageable once you understand how things are moving. Fine. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर So the last question for the day is about NaOH gradually added to H3PO4. How many different types of buffer do you expect? थ्री Naturally. And now what I'll do is, instead of writing 3 different equations, at some point of time, I would want you all to be comfortable with the fact that we end up writing K1, K2, K3, but it's about acid डालोगे तो ये पीछे आएगा, base डालोगे तो ये आगे जाएगा। Buffer 1 would be a mixture of H3PO4 and H2PO4 minus. Buffer 2 would be a mixture of HPO4 minus and
HPO4 minus minus, and buffer 3 would be a mixture of HPO4 minus minus plus PO4. Yes or no? Yes, sir. 3 indeed is the right answer. And I guess this much for the time being. Thank you so much for attending the class. And I think with these, very common type of questions on polyprotic titration, a question on these ideas would not bother you too much. If you have a doubt here or there, we'll talk about it in the live class. The next thing which I want to do, in such online classes is take some questions for indicator theory. I've already recorded a theory class on indicator theory, which is there in my channel. You can watch it. I'll put together all questions which come on indicator theory, which is again basically an equilibrium controlled by H plus or OH minus. And then we'll take up the routine questions on pH calculations for mixture of acid bases and the common questions for hydrolysis and buffer. So this was the time being. Stay happy, stay healthy. If you have something to ask me, you can do it. Otherwise, I see you soon. ठीक है बच्चे लोग मिलते हैं. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. Good night everyone. Bye. Good night, sir. Bye, sir. Bye.